So, the purpose of this orientation is to understand about the nature of the optional subject right now in civil services and their importance. Basically, as you know that there is ambiguity among the students regarding optional. Always there is a confusion that what optional the parents should pick, whether it depend on the background of their academics or based on the choice or interest, or basically based on the design of the syllabus as well as the length and the vastness of the syllabus. So there are various question in the mind of aspirant. If you people have any question, then you may ask. Otherwise, I am going to discuss about the geography optional, but I will give you idea how you make a conclusion that what optional is decent or suitable for you people basically. So when we talk about the optional paper, generally what I perceive that majority of students having the emotional, you can say, tilt towards the subjects of academics basically, but few candidates, those having the professional or technical backgrounds, they often opt the subjects which is very popular and common in the UPSC, and basically that subjects belong to humanity. So majority of candidates, when you look at the nature of optional, adopt humanity. But the candidates, especially those who are preparing for the Indian Forest Services along with the civil services examinations, they opt science because there is no alternatives, there is no choices there in the Indian Forest Services examinations. As optional, you have to pick only the science subject. So now when we look at the nature of the examinations and the pattern of examinations, then the most crucial part of this exam is the mains exam, as you know, because the merit of the candidate is decided by the mains specifically as well as the interview, that is the personality test. So the written examination is a very crucial part of examinations. Now, as per my own opinion, when a student having the doubts or ambiguity in the mind that what optional they have to choose, what they have to look into the recent trends. When you look at the recent trends, I have observed the trends since 2000. Earlier, between 2000 to 2005, when you look at, that was the golden period, you can say, till 2008. That was the golden period for the student of public administration, the students of geography, the students of Hindi literature, the students of anthropology. But when you look at the period right from 2008 onward till 2011-12, gradually the trend shows that the public administrations decline down. The rate of the selections in the public administration declines. The rate of selections from the literature slightly decline. The rate of selections from anthropology as well as psychology was the another
very favorite optional between the year 2002 to 2007. It was one of the best optional right now. Among the science, zoology was very favorable optional till 2007, because the Adappa Karthik got rank 1 from the zoology optional. He scored 401 marks. He was senior to me, I know him personally. So basically, first and the foremost things what you have to observe, that what is the recent trend which is going on, and according to that you have to basically opt the optionals. Now when you look at the cutoff marks of the recent past, when you look at, as I have said in optional, we are talking about the geography as an optional, and I have given you idea why generally when the candidates suggested, I also or asked to me to suggest what optional they had to prefer. I won't force them to opt any optional, but I always give them choices. I always suggested that based on their own merit of the subject, you decide about it. When you look at the recent past, I have the recent surveys, and when you look at the recent datas, then what we observe here, in the 2000, when you look at 17, the cutoff of the mains was for the general, when you look at, it is almost in the 17 or 16, it was around 809 when you look at. But gradually when you look at, in the 19, 20 and 21, when you look at, it is almost between 751 to 745 or 49. So on an average, when you look at, in the mains, the cutoff is in between 750 to 800 in the recent past. And out of this average cutoff, 750 to 800 in the mains, if a candidate, if an aspirant score in optional 250 plus marks, what I have mentioned here, if an candidate score in optional 250 plus marks, somewhere between 250 to 300, that is a decent score, and definitely after gaining that decent score, you can be able to clear the mains. Because when you look at the nature of examinations, what we observe here, in the nature of examinations, what we observe that in the general studies paper, there are 4 papers, as you know, that in the mains. The candidates, those who appear in the mains, having potential to score or achieve almost in this paper average 80 to 100 marks. If you balanced your preparation, you can able to score in between 80 to 100. If you look at the decent score in GS paper, it is almost around 100, 110. The best score is above 110. That is the best score in the general studies paper. But the average candidate, or you can say majority of candidate, those who write the mains, when you look at the trend, score between 80 to 100. If you able to, or if you manage to score 100 in each GS paper, on an average 100, if you score 400 marks, or if you able to score, and as I have said, when you thinking about opting an optional subject, look at the syllabus, look at the trend in the recent past.
as well as of course your interest somewhere, because this journey is long. And when you opt any optionals, it will take 6 to 7 months to complete that optional. So if you are going to invest 6 or 7 quality months over the optional paper, you must think twice before opting. So if you able to score in general studies 400 marks, and as I have said, in optional if you able to score more than 250, in between 250 to 300, say for example, then your journey will be easier. If you able to score even 650, means 250 in optional, 650, then again essay paper is there. Out of 250, if you score 50% marks in your essay, 125 or 150, which is an average score in essay. 150 is an average score. The decent score in essay is more than 170. Okay. So if you able to, then after getting 150 in essay, your score will be 800. And what I have said that according to my own observation, the cutoff right from 2014 onward, not more than 800, not more than. Always the cutoff of the mains. I am talking about the general categories student. I am not talking about the student those who belong to other backward class community, scheduled caste, scheduled tribe. Even their cutoff will be less than that. I am talking about the cutoff of the general candidate. The general candidate cutoff in 17 is the highest one, 809. The cutoff of the 2021 lies around 748. In 2020, 745, and in 2019, 751. And why the geography is as a very crucial optional? Because what is the benefit of this subject is, when you look at, as I have said earlier, what you have to find out, when you look at the trend of the recent past, from the geography, basically in the recent decades I am talking about, the number of candidates, those who appear in examination, is around more than 1000 candidates. So thousands and 1000 plus candidates appear from geography, appear from sociology, appear from PSIR, as well as, so these are very popular subject right now: geo, socio and PSIR, political science, international relation. Here the number of candidate are 1000 plus appearing for the mains I am talking about, because almost around 11 to 12,000 candidates are writing in the recent past the mains, and out of that I am giving you the data. After that, now in the recent past, what I have observed, the proportion of the candidate in anthro is again rising. Before 2005, anthro was a decent optional, but after 2007 there was a declining trend. Again the anthro is rising, but the number of candidates from anthro is lying between 650 to 750. From Hindi literature, 900 students, from history almost around 1000 or 1000 plus. So if you are thinking about opting subjects, first where the number of candidates is more, means there is a more chances of rejection as well as selection, because from every subjects almost 10% candidates selected. In the recent past, the number of selections from these papers is more than 100.
more than 100. Despite there is a rumor in the market that geography become tougher and there is a tilt towards sociology, but still geography is performing well. More than 100 candidates selected in the year 2021. In 2020 and 2019, I am giving you the trend of the past decade of the 10 years. So how you can opt a subject as an optional, looking at first the trends and the nature of questions, the demand of examinations, your understanding about that subject, and of course the syllabus. And here these subjects are performing well. So you can browse the syllabus of this subject, you can find out your interest, and then here majority of candidates, those who are attending this orientations, are willing to opt geography. Then I will tell you what is the merit of this subject and what is the syllabus of this. When you look at the benefits of this, as I have said, what are the underlying factors? I have given you the ideas of the underlying factors, the factors why the students are opting this subject. So what I have written here, it is multidimensional in approach. Why multidimensional in approach? Because when you look at, there is a blend of humanity as well as science, because geography is a multidisciplinary subject. So it suits the students, those having the scientific background or science background, as well as the students having humanity. So that's why the candidates attracted more about these subjects, because when you compare it with the history, then history is pure subjective, having the complete blend of the this humanity. Majority of people believe that that is ratifying, or subjects having the candidates has to cram more and more, but that is not the things. But that's why the candidate, those who have the science background, reluctant to take the history. As well as when you talk about zoology, botany or engineering, especially those having the background only can take, not the others. So this is the first things what. Now what is the other aspects of geography when you look at? Basically if you develop the concept, because it having the scientific blend, so if you develop the concept, 60% part is conceptual part when you go through. Of course the 40% basic facts as you have to cram, because you have to practice maps, you have to learn the location, you have to learn the definition, you have to understand the basic features. So the 40% part is the cramming part, but the rest of the part when you look at are the conceptual part. So once you develop or understand this subject, that will help you. Means no need to cram so many facts, try to understand. Because prima facie when you start learning this subject as a beginner, आपको हमेशा लगता है कि इतने सारी चीज़ें लर्न करनी होगी. That is a process. Once you understand the concept, even the definition will be easy to learn. So conceptual part it having. Now the another aspect in the selection is the standard materials. There are various subjects. When you look at the subject like economy, when you look at the subject like zoology, when you look at the subjects like engineering, mathematics, there is a less number of mentors or the guides available all across India. I am talking about. And if the mentorship is given by someone, they are not holistically
covering the subjects. This is the basic problem. But what is the benefit of this subject? That material is available everywhere. Decent amount of material is available online, okay, as well as the books, the quality and the standard book is also available, and some magazines supports to clear the concepts of this subject. So what is the another benefit of this subject is the standard material is available. You can opt that subjects where a standard material, mentorship and the guides are available. So this subject having another benefits that this thing is available for this subject. Now when you look at another aspect of this, why I am suggesting the candidates that you may go for the geography as an optional, because it play very significant role in the GS, not only in the preliminary preparation but also in the mains preparation. When you look at the trend of the questions, I have the trend of the questions of preliminary also, and when I observe the preliminary paper of the recent decades, again I am talking about the 10 years trends, then the average number of questions, when you look at average number of questions from geography in pre is lies between 15 to 20 questions. And when you look at ecology environment, which is also the part of the syllabus, it is also in the mains. Certain sections of ecology and environment you have to learn in the mains. So if you add on an average, what I have found that 10 to 15 questions appear from the ecology and environment. So if you add geography plus ecology and environment, you definitely get 30 to 35 questions on an average, or more than that in your pre-examinations. Out of 100 I am talking about. It may vary somewhere, but I am giving you the trends of the last 10 years. But here what is the dimensions you have to cover, both conventional and the current dimensions. Here you have to read a newspaper, again the decent newspaper you have to select. If your medium of expression is English, then you may go for the Indian Express or the Hindu, as I have said. And you have to opt some standard magazines again, like the magazines Yojana or Kurukshetra, especially that will support you to prepare your optional geography, as well as it really support you in pre-GS paper as well as in the mains also, GS1. Now another benefit when you look at, I am just giving you the ideas of the pre. When you look at the mains, GS paper 1 having the geography, here in the GS paper 1, history, social issues and geography are there, and there are 20 questions the UPSC has asked in the recent past. And when you look at the 8 questions on an average you get from history, 4 from social issues and 8 from geography. Again 8 questions here you get out of 20. So that's why what I have given you the idea why a candidate go for geography as an optional, and why this optional is popular still despite the diversity of the question is there, because multidimensional in approach, as I have said, and conceptual because having scientific nature, and the quality material is available easily, so you can find out anywhere in the market, especially those who are in Delhi, the material is quite easily accessible. Those who are outside Delhi, they can access the material. Availability and accessibility is again a very important factor. And then the role in the general studies. So if you opt this subject,
that will support you in your pre-preparation as well as in the mains. Not only in the paper 1, but when you prepare the paper 3 also. The disaster management and to learn the security scenario, the geographical knowledge will give you the extra advantage. Now when you look at to understand the basic international relations or geopolitics, again the geography play a crucial role, because when we use the geopolitics word, obviously the geography is there. So in the paper 2, when especially in the IR sections, when you try to address the issues of international relation, then what you observe that this subject again support you if you have the basic understanding. Once you have to work, but there is an advantage. What you have to understand, the application of this subject in a different different places according to the demands. But you have to become very smart in due courses. So being a teacher or a guide or a mentor, I will give you the idea how you can apply this subject. But it depends on the students' hard work, rigorous practice, understanding of the subject, that whether they are able to apply during the examination or not. So your practice, your hard work, your consistent work is very, very important and crucial in the preparation. Now, so why the candidates of geography and why should they go for geography, I had given you the idea. Now when you look at the syllabus of the geography, as you people know that there are 2 papers you have to write from the optional. Okay. Now when you look at here I have given you the syllabus of the paper 1. Now paper 1, if you look at, having 2 sections. One section is of physical geography, another is of the human geography. So when you learn the geography having always the dualism and dichotomy. The approaches to learn the geography is 2. One, there are various geographers who emphasized on, who focus on the physical part. We have to, in our syllabus, the UPSC mentioned the physical geography, because earlier when you started learning the geography, the earlier majority of geographers focused on these aspects. So here there are 5 in this physical geography. It means section A of the paper 1. There are 2 sections in paper 1, section A and section B. And there are 5 different units in these sections. The unit 1 is known as geomorphology, then climatology, and then oceanography, as well as the biogeography and environmental geography is the part and parcel of this section. Now here geomorphology means the geo means earth and the morphology means the outer structure. Over the earth's surface, we observe different outer structures like mountains or hills or plateaus or plains. What are the processes which is shape this morphology? You have to learn. So here you have to learn the physical processes of landform formation, the physical processes which is enshrined to develop the different landforms. So again this section having 70% part which is very, very conceptual and very dynamic. When you look at the geomorphology, in the recent past, some applied question has been asked by the UPSC. So you have to understand the processes, some basic theories and concept as well as their application.
Now, when you learn these units, it will support you to understand Indian geography well. When you learn this, it will support to give you a better answer in your GS paper. I would like to welcome here Prabodh sir. Prabodh sir has joined us. Good evening, sir. So we are discussing right now geography, why the students should go for geography as an optional. And right now I am discussing this syllabus of geography and how we can just explore this syllabus and go on through this one by one. Which unit first we have to focus. So just I had started this with geomorphology section. What I have said that in geomorphology, basically when you look at, there are 14 different topics are there, and under that there are subtopics which is mentioned. Once you cover that, what I have said that 70% of the conceptual part, applied sections are also there, and the UPSC is giving thrust over the applied section in the recent past. So first you have to go through the basics, you have to believe in yourself, as well as you have to browse the study materials, you have to learn the concept. Once you understand the concept, the expression will be easy. And then I will show you the paper also, and I will give you the ideas which kind of a question has been asked in this section in the recent past. When you look at the climatology, again a very important physical dimension which is here. And here in the climatology sections, especially in the paper 1, you have to understand the basic element and the component of the climate, as well as the basic processes, the climatic phenomena you have to learn here. Say for example, you have to understand the climatic components separately, like the role of temperature, the role of humidity, the role of precipitation. And of course, after understanding this element, the processes which involves, like the wind which is blowing, the cyclone which is generating, as you know, the air mass which forms. Okay, so you have to understand the phenomena of stability, instability. As a result of instability, you have to understand the process of formation of the cloud, as well as different form of precipitation. Getting my point? So again, here you have to learn the basic element and component, as well as phenomena, process and basic theories, which play very important and vital role in the paper 2 of the optional, where you have to learn the climate of India, the monsoon climate, and their impact over the Indian climate. So understanding of this, the understanding of the paper 1 geomorphoclimatology will support you to understand the paper 2 of your optional also, as well as in GS also. Now when you look at oceanography, oceanography means the hydrological aspect of the earth you have to learn. As you know, this majority of the part, 2/3 part of the earth is occupied by the water. So in geography, you have to learn the hydrological phenomena. Basically, the feature of the ocean bottom topography, as well as the hydrological behavior, processes and phenomena. The phenomena of the tides, how the tides generates, how the ocean currents forms, how the waves appears, what are the faunas which is present in the ocean, what is the significance. Now the faunas which is present in the ocean is the resources for the human being. Not only the water is the resource, but the fauna and the flora which is there, the aquatic life, the biotic life which is present in that hydrological sphere is also very important. So you have to learn the marine resources, that is a part of oceanography.
The deposits which is carried by the wind or the water or other activities, you have to learn, because that become a resources today. And such kind of a question, it is very interesting, easy topic. Oceanography is very easy part of your subject. Now the biogeography, bio means what? The bio means life, and geography means the study of the earth. So over the earth's surfaces, whatever the biotic components are there, we have to learn here. And in these sections we have to also learn about edaphic factor, about the soil, because soil is also the harbor or the place where what you find, the vegetations, the microorganism, the variety of biotic component. Soil is a habitat also for bounty of species, for millions of species, when we counted the microorganism also. So first we have to learn about the soil, the genesis as well as classification at the world scale, because Indian soil classification you have to learn in the paper too. So of course the process of degradation, why the soil is degrading, declining with the time, or the process of erosion, you have to learn. Here you have to learn about the wildlife species, here you have to learn the flora and the fauna. Okay. What are the factors in the recent past which affected this flora and fauna over the Earth's surface? And right now when you look at the questions having more biogeographical background and environmental background. Now apart from that, environmental geography, in environmental geography you have to understand the concept of environment, that is your surrounding. The surroundings of an animal or a plant affects their life, because in surroundings there are others community which is there. Apart from we are living in a community, other community are also there which affects our life, or within our community which is available in our surroundings, there are so many organisms, so many factors which affect our life. Say for example, the microorganisms, those who are living here in our surrounding, at my vicinity, affect my life. Okay, the viruses, the bacteria, other microorganisms as well as the microorganisms. So in environmental geography, the basic you have to, the basic theme, the basic processes and basic phenomena and theories you have to learn. You have to learn about the differences between the ecology and environment, then you have to learn the ecological processes and the environmental dimensions. You have to understand here the adaptability of the man in the changing environment, adaptability of other flora and fauna in the changing environment. You have to learn here the impact of the climate change over the environment itself, and the impact over the man and other species over the planet Earth. So here you have to understand about community, populations, ecosystem, biodiversity, biome. This is the part of the syllabus. Okay, getting my point. So in the section A, there are 5 different units are there. Under these units, there are 10 to 14 odd heads as well as subheads are there. But once you understand this part, that will support you for your writing and understanding the concept of Indian physical geography in the paper too. Now when you come to the section B of your syllabus, which is a part of human geography. Later the geographer believed that the human is one of the major component in geography, and they started emphasizing on the human aspect. So a new branch has developed in the geography, the human geography, and there are lots of geographers who has wrote different aspects of human geography. Now when we look at the first is the perspective in the human geography. Here
You have to understand the genesis of this subject, how this subject grew. This is the philosophy of the subject. This is the thought of the subject. Here you have to learn the thought and the thinkers. As you know, in every subjects, when you learn the history of that subject, and during that period of time, you learn about the different thinkers, philosophers, writers, authors, those who contributed to grow that subject. So here in these sections, in this unit, you have to learn how the genesis of these subjects takes place, how different ideologies grow within the geography. Somewhere though the candidates having different background, not the geography as a background, then these sections always haunted them. But again, what I would like to suggest to you people, again it is a very interesting topic. यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. इसको अगर बीच से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा. क्रोनोलॉजिकल स्टडी करनी होगी. तुम्हें एंशियंट से मॉडर्न की तरफ आना होगा. बच्चे क्या करते हैं कि द स्टूडेंट्स स्टार्टेड विद द पिक द नोट्स, और वो बीच से कोई भी पढ़ेंगे तो उनको लिंक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स की जब जेनेसिस या हिस्ट्री ऑफ दैट सब्जेक्ट इफ़ यू स्टार्टेड लर्निंग right from the beginning, then you understand the linkages between the different ideologies. एक के बाद एक पैराडाइम्स आता है, एक समय आता है जिसके बाद अचानक से एक बड़ा चेंज आप देखते हैं. That is a part of perspective also. पर्सपेक्टिव में एक टॉपिक ही है पैराडाइम इन ज्योग्राफी. सो अगर आप देखेंगे तो एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ. एंशियंट टाइम पीरियड में देखोगे तो ग्रीको रोमन ऑथर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी के अंदर. द फिलोसफर्स लाइक सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, एनेक्सिमेंडर, थेल्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे आप देखोगे द फिलोसफर दोज हु कंट्रीब्यूटेड वेल इन ज्योग्राफी. द इजिप्शियन also contributed. Okay. Now when we look at the medieval phase of the geographical you can say exploration, then Arab thinkers having the great roles, the West Asian thinkers having great role, Al-Biruni, Al-Mashudi, these thinkers having the great roles. When you come across the modern time period, the thinkers from the Europe, especially the Germany, France, UK, and later the US, having a great contribution. The Indians thinkers and geographers also play a very significant role. But यहाँ पे आपको वो पूरा genesis पढ़ना है इस छोटे से sections में. That is one unit where you have to understand a brief history of development of a geography as a discipline, how it grew, how earlier the people are deterministic in approach. They learn basically the physical part of geography, they emphasizes over that, how the things had changed over the time, how the concept or the ideas of possibilism, probabilism, humanism, feminism, अभी तक अब ह्यूमनिज्म के अंदर भी आ रहा है, वेलफेयरिज्म, फेमिनिज्म, अब ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं और हो चुके हैं. इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, पीएचडी हो रही है, ब्रांच है, डिसिप्लिन है. तो हर एक आइडियोलॉजीज़ के बारे में आपको उसके प्रोपाउंडर्स, उनके आइडियाज़, कौन कौन से बिलीवर्स हैं, कैसे ये जेनेसिस हुआ, मार्क्सिज्म कैसे जेनेसिस हुआ, उसका ज्योग्राफी पर क्या इन्फ्लुएंस था, हाउ द आइडियाज़ ऑफ वेलफेयरिज्म डेवलप, उसका क्या इन्फ्लुएंस है. तो ये आपको लर्न करना है इन दिस सेक्शंस पर्सपेक्टिव. Then in economic geography, when you look at, we have to understand the distribution of world resources, the pattern of distribution, the factors which is affected the resource exploitations. So this is the economic geography part. Here you have to learn some models and theories also. So model and theories you have to learn, and the laws of the human geography.
You have to learn the population and settlement geography also. The feature of population, say for example, the size of population, how the size of population in some countries increasing with very fast rate, why somewhere the rate of growth of the size means total number of population is quite stagnant and slow. Why somewhere the density is very high, what is the concept of overpopulation, underpopulation, optimum population. There are various theories related to the population geography. You have to learn the concept of that. Overpopulation कब word use करोगे, underpopulation कब करोगे, optimum population कब करोगे. उसी तरह से जब पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, कुछ थिंकर्स आपको पढ़ने हैं, आपको माल्थस पढ़ना है, माल्थस की थ्योरीज पढ़नी है पॉपुलेशन ग्रोथ की. व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ माल्थस अबाउट व्हाई द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग समवेयर एंड डिक्लाइनिंग समवेयर, व्हाट वाज द ट्रेंड, what was effect on the resources of this growing population, how we can control and manage, how we can. So, and you have to learn about the Marx philosophy and the theories of population as well as the theory of demographic transitions. So here in population you have to learn basically these 3-4 theories. Once you understand in the light of these theories, that generally you get a questions in UPSC, as well as basic feature of population. Mobility is another feature, mobility or migration. In the recent past, I observed various questions came from migration. In the last decades, when you look at in GS paper as well as optional, we find various questions from migration. So, and the settlement, in settlement geography, as you know, there are two kinds of settlements, the rural and the urban settlements. You have to understand the basic differences of this settlement pattern and the types, as well as again there are some theories which is related to settlement. Say for example, central place theory given by Christoller is related to this settlement geography. Okay, so we have to learn some theories related to this settlement, rank size rule, a sphere of influence. There are certain theories are also there, but that is not very tough, very easy, and again very conceptual, and you can use the diagram to express your opinions. Okay, and through diagrams, flowchart and map, you can show your opinions, you can explain that theory even. Apart from that, another unit is regional planning. Now when you become an officer, if you become an IS or IPS or whatever be, then planning is become the part and parcel of your life. Now when you entered into the job, we don't know, depend on your ranking, you will get the cadre. And when you get the cadre, maybe that within that cadre, the underdeveloped or least developed region may be there. If you posted in Jharkhand or Haryana or in the northeastern belts, that belt, and in hilly areas, when you look at in desertic area, there are lots of regions which is underdeveloped. When you look at the nature of the landforms, as I have said, some regions are hilly, some are plain, some are desertics, okay, some are the plateau regions. Everywhere the resource distribution is different. Everywhere the culture is different. Despite some homogeneity is there, because India having some homogeneous feature are also there. Some cultural similarity is there. Say for example, majority of Indians speak Hindi, but what we find at regional scale, the Hindi are of different accent. There are different dialects. So what is very important, the regional planning. This unit gives you idea
how you can plan the tribal area, how you can plan the flood area, how you can plan the hilly area, how you can plan the schedule and schedule caste and schedule tribes area. Okay, so basically that gives you ideas about the planning, how a planner design the plan. That is a very crucial aspect of learning that will support you further in your life. Once you become an officer, then you may apply this concept there. And as I have said, some models and theories are also there and some laws. Say for example, on what basis, when you look at some laws, on what basis the boundaries has been demarcated between two nations? There is a law for that. That law has been designed by an agreement between two countries. Okay. So you have to learn some basic laws, model and theories. So 5 units in section A and 5 units in the section B in the paper 1, you have to learn the 10 units. And in 10 units on an average there are 7 to 12 heads are there. So on an average you have to learn basically 100 heads out of these 10 units. 10 multiplied by 10. Okay. So now when you look at the nature of questions from both this section A and section B, the first questions in UPSC Geography optional paper 1 came from this section and the 5th number from this section, and 1st and 5th are compulsory. When you look at the nature today, the pattern of the question, what you find, there are 5 questions, short notes of 150 words every year came from these sections. सभी यूनिट से एक क्वेश्चन होगा. So to address this first question, you have to gone through all these units. सबसे एक एक क्वेश्चन देते हैं. यूपीएससी भी स्मार्ट है, वो चाहती है बच्चे बैठ के सभी सेक्शंस पढ़ें. ऐसा नहीं कि कोई एक सेक्शन छोड़ के जाओगे तो तुम एक क्वेश्चन मिस कर जाओगे या फिर उसमें स्टैंडर्ड आंसर्स नहीं दे पाएंगे शायद, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है. सो व्हाई दिस एग्जाम इज टफ बेसिकली, क्योंकि इट डिमांड्स व्हाट द सिटिंग एबिलिटी. यू हैव टू ब्राउज द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू लर्न वन. एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव नहीं है. चाहे आप कोई भी ऑप्शनल ऑप्ट करेंगे, यही ट्रेंड है. वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में पेपर 1 के वो कंपलसरी बना देंगे, सभी यूनिट से क्वेश्चन होगा. लाइक दैट व्हेन यू लुक एट दिस 5th नंबर, तो यहाँ से भी सभी यूनिट से एक एक शॉर्ट नोट्स वो पिक करेंगे. सो अगेन यू हैव टू कवर ऑल द यूनिट्स फॉर दिस 1st and 5th क्वेश्चंस. यूपीएससी इज क्वाइट स्मार्ट. आप जितना सोचते हैं उससे वो कहीं आगे सोच लेते हैं. ठीक है, तो कवर करना है, इतना भी टफ नहीं है. पढ़ोगे प्रोसेस में, वंस यू गो थ्रू द सिलेबस, दैट पार्ट विल बी इजी. इट डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस वेदर यू आर एबल टू पुट एन स्टैंडर्ड आंसर इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम और नॉट. यहाँ इश्यूज ये नहीं आप आंसर लिख नहीं पाओगे. इश्यूज ये है कि उस टाइम फ्रेम में स्टैंडर्ड आंसर का स्ट्रक्चर बनाकर उसको एड्रेस कर पाओगे कि नहीं. और ये डिपेंड पढ़ने पे नहीं करता, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. आफ्टर लर्निंग यू हैव टू प्रैक्टिस टू राइट द डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ द क्वेश्चन. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर एज वेल एज द नेचर ऑफ क्वेश्चन. देन यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन. और प्रैक्टिस पहले बिगनर हो तो नहीं कर पाओगे, थोड़ी नॉलेज बेस बना लेंगे उसके बाद ही करेंगे. तो इनिशियली मैं हमेशा बिगनर्स को सजेस्ट करता हूँ कि पेशेंटली, कंसिस्टेंटली जो मैटर दिया जाए उसको पढ़िए, और साथ में अगर आपको कोई सजेस्ट किया जाए सप्लीमेंट्री रीडिंग्स तो आप कर लीजिए उसे. उसके बाद ही आप
आंसर्स लिख पाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ, वो कंसिस्टेंट रीडर्स नहीं हैं, लर्नर्स नहीं हैं, और इसलिए वो हॉलिस्टिकली कवर नहीं कर पाते। और मैंने क्या कहा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है आपको, बिकॉज सब्जेक्ट हैविंग लिंकेजेस। Once you won't understand the linkages, you miss the linkages, if your continuity will break, because the problem with the candidate is the continuity. उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेज रहते हैं, ये प्रॉब्लम थी, ये घर में आ गया, ये मेरे लाइफ में आ गया, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर रहेंगी, वो एक दिन में सॉल्व नहीं होंगी, वो आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, और हार्ड वर्क का अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा एक बहुत वायरल हो रहा है समस्तीपुर का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, 1996 में 10th उन्होंने पास किया, 3rd डिवीज़न मार्क्स, 3rd डिवीज़न, नॉट इवन द 2nd डिवीज़न, स्कोर इज 387 somehow. Later he cleared UPSC. UPSC में एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाले भी सिलेक्ट होते हैं और हो रहे हैं, एवरेज वाले भी और बिलो एवरेज भी। वाई? बिकॉज what is required here, the consistent and the hard work, your effort and motivation, which is very much required. You can crack this exam easily. Now, so this is, I will show you the paper again. मैं पेपर शो करूँगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, पहले सिलेबस देख लें। Now come to the paper 2. Again, when you look at the paper 2, then what we observe here, that once you look at in the section A, again there is a 2 sections, section A and section B. Once you look at this, the section A having the physical geography, the physical setting of India, you have to learn here the physiographic division of India. The India having the mountains, the India having the plain, the India having the plateaus, hills, deserts, India having the coastal areas, somehow generated by the wave actions, as you know, along the ocean. We have a long coastline. So you have to understand this, how this geomorphological landforms develop. You have to understand the landscape development, the landform development, the physical landscape. So you have to learn here the Himalayan origin, you have to learn here the Indo-Gangetic plain origin, you have to learn here how the coastal plains develop. The coastal plain, as I have said, is not the actions of the rivers, these are due to the actions of the waves. Okay, there is a role played by the rivers also to form the deltas and estuaries, as you know. So you have to understand the physical phenomena and the landforms. Okay, then in the section A, once you look at the mains questions, the first question is the map based question. 10 entries, UPSC asked the 10 entries of 2 marks. So the UPSC award you 20 marks if your entries is correct. So they will provide you a map, they will provide you entries. If you have to locate that entries into the map, and you have to write some features, and what features you have to write is also mentioned in your paper. You have to write the ecological significance, physical significance, economic significance of that entries. I will show you the question, then you get the ideas clearly. Now, apart from the physical, the human aspect are also there. Resources you have to learn, the resources, Indian resources, mineral and the non-mineral resources, energy and non-energy resources, renewable and non-renewable resources, their availability, their accessibility, their prospect,
the technology which is involved, the recent trend of the resource exploitation. And again, this gives you a better idea, better picture of India. You understand India better by learning that. Agriculture, which is a primary economic activity, it is the major source of subsistence for the Indian people. You have to understand the basic technology involved, the basic processes, the basic movement, the basic revolution in the field of agriculture, like green revolution, white revolution, which change the nature of agriculture and allied sectors in India, that change the lives of the millions of people. So you have to understand the nature, how these things has been changed due to the course. Okay, the agricultural input, the agricultural infrastructure, you have to learn here. What are the basic inputs? The basic inputs like power, like seeds, like fertilizer. You have to learn little bit about all these things. Then you have to learn about agroecological region. India is divided into different agroecological region, depend on different conditions. India is divided into different agroclimatic region, depend on different climatic condition. You have to learn these aspects also. You have to learn the concept of agricultural productivity, agricultural intensity, agriculture efficiency. That also support you to write a good essay also. So these topics, this understanding of this topic gives you a better understanding of India, the ideas, and on the basis of that you can write a better essay also, and you can use the information in GS paper also. Now when you look at this, in the industry, again the manufacturing unit, the secondary sectors, and having the backward and forward linkage with the tertiary, means the services also. So you have to learn about the basic industries of India and how and what pattern we find in industrial settlements. Okay. So right from the beginning, right from the colonial era to the present era, a brief history you have to learn. You have to learn the basic industry and the major and some minor industries like cotton, textile, iron, steel. तो यहाँ पे बहुत सारे industries हैं, but अगर when you observe the questions, they are giving thrust over major industries and the industries having demands in the recent past. तो आप देखोगे ज़्यादातर क्वेश्चन कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर है या आयरन स्टील के ऊपर है या एल्यूमिनियम के ऊपर है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, या आईटी सेक्टर विच इज़ ग्रोइंग, आईटी इंडस्ट्रीज, सर्विसेज इंडस्ट्रीज आजकल डेवलप हो रही है, एडुकेशन इज ऑल्सो इंडस्ट्री, देयर आर वेरियस, लगातार अभी देखोगे न्यूज़पेपर में इसके बारे में आ रहे हैं डिस्कशन. बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, दे आर नाउ कमिंग इन दिस फील्ड लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो अब फ्यूचर में ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है, एडुकेशन से, आईटी से क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलर. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ओके, और कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो न्यूज़ में होते हैं किसी खास रीजन से, जैसे शुगर मिल्स which is, you can say, the backbone of the economy of western UP, Maharashtra, northern Bihar. तो इसके ऊपर भी आते हैं क्वेश्चन. So you have to develop a skeleton, you have to understand. आपको कुछ इंडस्ट्रीज पढ़नी है, उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस को पढ़ने हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने, इंडिया में लोकेट करो कहाँ है, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है. इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाते हो, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके लिए कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं, आपको वो लिस्ट बनानी पड़ती है, उसके कंस्ट्रेंट होते हैं,
Some industry required huge investment like iron and steel. कोई छोटा मोटा प्लांट लगाने में भी करोड़ों अरबों रुपए के खर्च हैं. So you have to understand the basic dimensions. The question always asked on the conceptual part. हमेशा देखोगे, अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ लर्न करोगे तो फैक्ट को भी पढ़ना आसान होगा. यू कैन लर्न ईजिली द फैक्ट्स. एंड इफ यू स्टार्ट क्रैमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आखिर ये क्यों पढ़ना था, कि ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से, कोल कहाँ से मंगा रहे हैं, क्यों पढ़ना है, मैंगनीज क्यों आ रहा है, ठीक है. तो अगर वंस यू अंडरस्टैंड, यू फिक्स्ड इन योर माइंड, तो उसी तरह कंस्ट्रेंट, लिमिटेशंस, प्रॉब्लम, प्रॉस्पेक्ट सभी उससे रिलेटेड पढ़ने. फॉरेस्टेड रीजन में इन्वायरमेंट इज अ इश्यूज. हिली एरियाज में, सिस्मिक जोन के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते. व्हेन यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पैटर्न, जम्मू कश्मीर में कितनी इंडस्ट्री आपको दिखती है भी, या उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में आपको फार्मा इंडस्ट्रीज दिखेंगी, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट रीजन में चले जाओ तो तुम्हें देखना भी है व्हाट आर द फिजिकल कंस्ट्रेंट, व्हाट आर द सोशल कंस्ट्रेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन यू हैव टू मेक ए skeleton. वी विल लर्न. Then transport, communication and trade again play very significant role in the economic development, or you can say the socio-economic development of a country. The transport, communication and trade, these are the arteries, okay, that communicate. Transport also communicate. It links the people from one area to another. It helps to mobilize the goods, okay, and services. So major transport system you have to learn: railways, roadways, waterways, airways, as well as advanced mode of transport. Right now there are various advanced mode of transport has been generated due to technological genesis in the present era, okay. The fastest and the swiftest mode of transport. अभी एयर टैक्सीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है. आप अपने घर के छत से और इंस्टीट्यूट के छत पे आ जाओगे, ठीक है, और पढ़कर फिर घर वापस चले जाओगे, ठीक है. अफोर्डेबिलिटी चाहिए, बट अवेलेबिलिटी हो जाएगी. अफोर्डेबल बनाया जाएगा. आज से 10 साल पहले आप गूगल मीट पे क्लासेस सोच भी नहीं सकते थे, अभी सोच रहे हो. आगे के जनरेशन के लिए होगा. द endeavor is going on. So here communication, the means of communications you have to understand. The telegrams, then telephone, then mobile, then internet, and the trade practices and the constraint in the trade, the monopoly in the trade, the largest trade partner. Geographical aspect आपको पढ़ना है in a space and time, बदलते हुए. Then cultural setting. We are learning the human aspect of geography. Culture is a way of life associated intricately with the human. It is not an individual concept. Culture never be an individual concept. It is a social concept. We are the social animal. Okay. So in geography, the culture also associated and learned by the geographer. And the pioneer geographer was the Radgel, the German Friedrich Radgel, who gave the concept of cultural landscape. And the people attracted to learn the culture. And now there is a separate branch in geography, the cultural setting and the cultural geography. Here we have to learn what do you mean by culture, what are the feature of the culture, what are the component of the culture, how the culture evolve, what are the cultural region of the world, what are the cultural realm of the world. We are living in India. India comes under Oriental realm. The people, those who belongs to Oriental realms like India, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Myanmar, China, Japan,
Southeast Asia, Malaysia, Indonesia, Philippines. When you look at the peoples are Mongoloid races, what are the dominant religion, the offshoot of Hinduism, the Buddhism, Jainism, Sikhism. Even in China and Japan, the majority are people having belief in Buddhism. Are you understanding this? The food habit, the dress, the languages, all these are the cultural component, cultural traits. The culture is transmissible. The culture is also dynamic. Now, in this globalized era, you have to understand the role of globalization or impact of globalization over the culture. It is a recent questions which appear in the recent past. Due to globalization, the new normal is English. English become a global language. अब सोचिए, भारत में ही कई हजार लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट तो और भी, लेकिन अगर आप देखेंगे उसमें स्केड्यूल हमारे इतने सारे हैं लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हैं, और वर्ल्ड स्केल पे आप सोचो कि लाखों लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत पॉपुलर हो गया, सभी लोगों को जोड़ दिया। किसका प्रभाव है? ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है। कभी धोती कुर्ता और साड़ी और अंग वस्त्र और क्या क्या पहनते थे, अभी जींस शर्ट शूट पहन रहे हैं। वेस्टर्नाइज कल्चर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं साइंटिफिक इवोल्यूशन। वंस द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो, द पीपल बिकम लेस ऑर्थोडॉक्स। गेटिंग माई पॉइंट? So culture is a dynamic concept. You have to learn. Again here you have to learn the settlement pattern types in India and their pros and cons, some schemes which is developed. A smart city, अब इसके ऊपर कई क्वेश्चन आए हैं अभी रिसेंट पास्ट। अलग अलग एग्ज़ाम जाओ, बिहार जाओ, यूपी जाओ, एमपी जाओ, यूपीएससी में, जीएस में, ऑप्शनल में, हर जगह आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट में वो अभी एक बहुत क्या है, That is a very hot issues, very demanding. हमारा जिस तरह पॉपुलेशन है, हाउसिंग और स्मार्ट सिटी डेवलप करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया ड्यू टू द पॉपुलेशन डेंसिटी. Again, regional development and planning, the paper 1 concept you can apply here in paper 2. How you can develop the tribal area of India, how you can develop desert area of India, how you can develop drought prone area of India, how you can develop flood prone area. In this week, I have heard the news, 3-4 news of the cloud burst in the Assam, in the Manipur, in Himachal Pradesh. कुल्लू में अभी 2 दिन पहले, कल जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्री 16 people died. 6 people flood में कुल्लू में बह गए थे, cloud burst. So, जो वैली रीजन है, कैसे उसको तुम डेवलप करोगे? How you can develop? So now, and then the political aspect is there. Here you have to learn the, because as you know, when you look at the geographical position of India, then India having the unique geographical position, as you know, that India is a peninsular part surrounded by the ocean from 3 sides, as well as we have the land border with the different countries. So we have a unique geopolitical position. There is a very crucial and significant role played by the Indian Ocean, and Indian Ocean having a very crucial role in the geopolitics also. So in your syllabus, it is mentioned the geopolitics of Indian Ocean. You have to learn what are the geopolitics is going on. Then you have to learn here in geography the land disputes with different nations, like with Pakistan we have a land border disputes, with China we have, with Bangladesh we have, and sometimes some issues raised with Nepal. Recently a issue has been raised with Nepal over the region along the Kali river or the Mahakali river. So basically the geopolitics is a very important part, and it is a part and parcel of your syllabus, because political geography is also a syllabus. Indian polity, how guided by geography.
Okay, you have to learn. Now, as you know, in that when you look at the distribution of resources, the distribution of resources also guides the geopolitics, because there is no homogeneous distribution of resources. There is an import and export of or exchange of materials takes place between the different countries. Now the Ukrainian war affects the geopolitics of entire world, as you people know. How the petroleum prices has been rises and shoots up. How the global food prices has been increased, especially the prices of the wheats in the market. It also affects, despite the Russia and the Ukraine won't share the border with India, but that war having impacts over the Indian geopolitics, because the world is globalized. So in reference to the Ukraine-Russian war, if the questions appear how it affects the geopolitics of India, तो आप सरप्राइज मत होइएगा, आ सकता है, it may be asked. और इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैं बताऊंगा कि न्यूज़पेपर का भी बहुत क्रूशियल रोल है, वो जीएस के लिए भी और आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी, and in some other optional also the newspaper having vital role in sociology, in polity, in public administration, in economy, somewhere in history, at a cultural dimension. So newspaper is basically a very crucial part of your learning, your preparation. So don't miss, develop a habit to read the newspaper. I always say it, develop the habit. It's a good habit. Now, the last is the contemporary issues. The issues of related to environment or the social issues or economic dimensions related to India, economic, not purely economic, which is associated with geography. Say how the degradation of soil affect the millions of the people's life, how it affect the agricultural production of India, how the cloud burst which occurred in the recent weeks or the past affects the life of the people or the landforms, what are the processes which is involved, getting my point. So contemporary issues you have to be vigilant, where और contemporary लिखा है तो obviously ये किसी book में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको newspaper और magazines में ही मिलेगा. You should be vigilant, attentive what is going on in your surrounding, getting my point. So basically this is the part. Now when you look at this is the paper of 2021, paper 1, geography optional. Let's look at the paper 1. In paper 1, as I have said, the question number 1 is compulsory for all the candidates, and there are 5 questions, A, B, C, D, E. If you look at in the 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, there are 5 units in section A, because this is section A, Khand A, section A. Geomorpho, Climato, Oceanography, Biogeography, Environmental Geography. I have discussed 5 units in paper 1, section A. What I have said earlier, the UPSC pick one question from each unit. Say for example, first question, describe the concept of altiplanation. This is the questions came from geomorphology. I will discuss the concept of altiplanation. Now, what are the important factors responsible for air mass modification? This is the question from climatology. Now, discuss the hazards associated with the rise of sea surface temperature. It is from oceanography. Now, when you look at
Gene pool center are the good hope for biodiversity conservation. Elucidate. The question from biogeography especially mentioned gene pool center of the world. ये टॉपिक ही है, उठा के पूरा ही ऐसे डाल दिया शॉर्ट नोट्स. Then describe how ecosystem services of Himalaya are essential for highland lowland sustainability in Asia. From the environmental part. So they pick one question from each unit. That's why you have to cover, you have to must develop what? A basic idea over each. Now, when you look at, apart from one, there is a second question, third question and fourth question. अब इसमें रूल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी को अटेम्प्ट करना है. उसके बाद सेक्शन ए से आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी से भी फिफ्थ के अलावा कोई एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कंपलसरी. यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से एटलीस्ट तुम्हें कोई एक अटेम्प्ट करना है और एक के तीनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं. ऐसा नहीं कि आपको दो आते थे और एक नहीं आता था तो एक किसी दूसरे का अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते. यू हैव नाउ हियर UPSC is quite intelligent. Earlier, before, when you look at the trend before 2014, okay, I observed that right from 2009 ज्योग्राफी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े इंक्रीज हो गए. क्यों? क्योंकि पहले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मैप्स आते थे और इतने इजी मैप्स कि आप इजीली स्कोर कर लेते थे. उन्होंने मैप को पेपर 1 से हटा दिया. आपके पास एडवांटेज होता था, केवल मैप अब पेपर 2 में है. अभी यहाँ पेपर 1 में भी मैप होता था, 20 एंट्रीज होती थी और इजीली यू कैन स्कोर. उसमें 16, 17 सबको आता रहता था. जो भी थोड़े स्टैंडर्ड, अब मेंस लिख रहा है तो बच्चा थोड़ा स्टैंडर्ड तो डेवलप कर लेता है. उन्होंने क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया. ठीक है ना, उसको हटा दिया क्योंकि एडवांटेज मिलता था ज्योग्राफी स्टूडेंट को. अभी भी डिसएडवांटेज नहीं है. उसके बाद क्या था? एक यूनिट से क्वेश्चन होते थे तो आप सिलेक्ट कर लेते. वंस यू प्रिपेयर जियोमॉर्फोलॉजी तो सेकंड नंबर क्वेश्चन केवल जियोमॉर्फोलॉजी का होता था, थर्ड कंप्लीट क्लाइमेट का होता था, फोर्थ ओशियन का होता था या इन्वायरमेंट का होता था. ऐसा होता था सेपरेट. तो बच्चे सेलेक्टिव हो जाते थे. 5 यूनिट्स में से 3 यूनिट पढ़ कर गए. उनका जियोमॉर्फोलॉजी जिसका अच्छा है वो वही पढ़ के गया, उसको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलना ही है. कोई क्लाइमेट पढ़ के गया, जियोमॉर्फोलॉजी उसको मज़ा नहीं आ रहा. अभी उन्होंने जब ऐसा देखा तो उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट किया यूपीएससी ने, स्पेशली आफ्टर 2014. और उसी ट्विस्ट के कारण अभी बच्चे एक मार्केट में र्यूमर उड़ाते हैं कि ज्योग्राफी टफ हो गया. बट ऐसा सभी सब्जेक्ट के साथ उन्होंने किया. सेम ट्रेंड विथ ऑल द सब्जेक्ट. अभी आप चूंकि दूसरे सब्जेक्ट का पेपर नहीं देख रहे हो इसलिए वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बता भी दूंगा. सभी पेपर में सेम ट्रेंड अपनाया उन्होंने. अब क्या कर रहे हैं? हर यूनिट से मिक्स कर दे रहे हैं क्वेश्चन. व्हेन यू लुक एट सेकेंड नंबर क्वेश्चन ABC, नाउ 20, 15, 15 टोटल 35. अभी देखो यहाँ पे 50 मार्क्स का है ये. 22A 20 मार्क्स क्वेश्चन, 2B 15 मार्क्स, 2C 15 मार्क्स. The concept of plate tectonics has been derived from the isostasy and continental drift theory. Elaborate, citing suitable example. This question is from geomorphology. जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी के पहले भी कुछ थ्योरीज आई. कहता है क्या उस थ्योरी का इन्फ्लुएंस था प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर? अगर था तो एग्जाम्पल के साथ बताइए. तो अगर मैंने क्या कहा, कभी भी चीज़ें क्रोनोलॉजी से पढ़ोगे तो समझ में आएगी. अब पहले वाली थ्योरी पढ़ी नहीं, सीधे प्लेट टेक्टोनिक्स का नोट्स पढ़ लिया तो क्वेश्चन ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा क्या है, लिंकेजेस नहीं है. देयर इज़ अ लैक ऑफ लिंकेजेस. उसके पहले आया है आइसोस्टैसिस का कॉन्सेप्ट और ये क्या कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज, आइसोस्टैसिस, ये कॉन्सेप्ट्स फ्लोट कर रहे हैं, उससे लिंक किया.
Second question 2b, give a detailed account of bottom topography of the Pacific Ocean. The question from Oceanography, mix किया Geomorpho Oceano. Third question, soil erosion, soil degradation are threat to food supply. Discuss. This question is from Biogeography. चैलेंज क्या है एग्जाम में? चैलेंज ये नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन आते रहेंगे. चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट, चैलेंज है कितना आप प्रैक्टिस करके घर से जाते हो. सो यू कैन स्विच योर माइंड फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर, फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. तुरंत से फ्रेमिंग करनी पड़ती है. बेसिक थिंग इज द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि टाइम लिमिट 3 आवर्स है और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आपके पास 13 मिनट्स होंगे और 15 वाले के लिए आपके पास 10 मिनट्स होगा. स्ट्रक्चर उतनी ही देर में बनाना है और वो क्वेश्चन चूंकि डिफरेंट यूनिट से आ रहा है तो जियोमॉर्फोलॉजी से ओशियोनोग्राफी जंप करना है, फिर बायोजियोग्राफी हो सकता है, इन्वायरमेंट पे भी जंप करना हो या क्लाइमेट पे भी. इसके लिए क्या चाहिए? मैच्योरिटी एंड प्रैक्टिस एज वेल एज कॉन्फिडेंस दैट यस आई एम रेडी टू टेक दिस चैलेंज. सो बेसिकली बच्चे वहाँ थोड़ा सा डर जाते हैं या हैफजर्ड जब वो घर से प्रैक्टिस नहीं करके, क्योंकि क्या है मेंस में 12,000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उसमें से 7,000 बच्चे तो रिगरस प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4,000 बच्चे नोट्स ही पढ़ने में बिजी हैं. पहले पढ़ लूँ फिर लिखूँगा, तब तक एग्ज़ाम आ गए. प्रैक्टिस करके गया नहीं, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, वहाँ स्ट्रक्चर ही नहीं सोच पा रहा है टाइम पर. नॉलेज तो उसको बहुत है, कैसे कॉम्प्रेस करना, क्या लेना, क्या लिखना. So with learning, making a structure, creating a structure, writing practice is again very, very crucial and valuable. Now when you look at question 3, what I would like to suggest you people, the trends analysis I am giving you, कि अभी तो आपको चूंकि सिलेबस आपने पढ़ा नहीं है तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड और नेचर क्या है, बहुत टफ नहीं है, बट वो एक पजल है. ठीक है ना? आपने हर्डल रेस देखा होगा, एथलीट के सामने ऐसा हर्डल लगा रहता है, दौड़ने में उनको जंप करना है, दैट इज अ हर्डल रेस. द यूनिट्स आर द हर्डल्स एंड यू हैव टू जंप फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर. नाउ व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन मेजर इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर वेरिड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेटोलॉजी क्वेश्चन. Maritime security is being neglected, indicate the major challenge and suggests solutions in the context of law of the sea, oceanography. And explaining the concept of carbon neutrality, describe the measure taken by the carbon positive and negative nations. Those who are producing more carbon, those who are producing less carbon, environment. तो क्या देख रहे हो पैटर्न क्वेश्चन का? एक यूनिट से ही सारे नहीं आ रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं. इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स को सभी यूनिट्स पर टाइम देना पड़ेगा. दे हैव टू स्पेंड टाइम ऑन ऑल द यूनिट्स, दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू डेवलप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवर ऑल द यूनिट्स. गेटिंग माई पॉइंट? वंस यू हैव, नाउ थर्ड भी वैसे ही है. फर्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, सेकेंड देखो यहाँ स्ट्रीम बेसिन्स, जियोमॉर्फोलॉजी, इन्वायरमेंट, और थर्ड कॉजेज ऑफ लाइटनिंग. अभी अभी बिहार में कुछ लोग बिजली गिरने से, लाइटनिंग से मर गए. लास्ट ईयर भी डेथ हुई थी यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी. So why this is again interesting, or for the less prepared candidate it is very challenging, because here you have to jump, you have to create a balance between different units. एक बार तो अच्छे से करना है तैयार. अब सेक्शन बी देखो, यहाँ भी 5 क्वेश्चन कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, and there are 5 A, B, C, D and E, 5 units, सभी से एक क्वेश्चन है. The interrelationship between social and spatial structure are complex, ले दिया. Energy transition seen in the instrument for achieving zero carbon, यहाँ पर आ गया. Resource and economic geography, यहाँ देखो population and settlement है, social aspect. Protected
Cultivation assist in healthier and larger produce. Economic geography. Explain the process of contagion and hierarchical diffusion addressing regional imbalances. RDP, regional development and planning. Examine the relevance of central place theory, settlement geography. सभी यूनिट से यहाँ पर भी उन्होंने एक एक क्वेश्चंस पिक करके डाल दिया आपके पास, और ये टफ क्वेश्चन नहीं है. व्हेन यू लर्न द ज्योग्राफी पेपर 2, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है जो यहाँ दिख रहा है. 150 है वर्ड्स में लिखना, इसके लिए आपको 7 मिनट्स मिलते हैं. 7 मिनट में आपको लिखना होता है एग्जाम्स के अंदर. चैलेंज क्या है? टाइम पर लिख कर आना, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. और मेरी बात 100% I can guarantee it, if you attempt all the questions and if you write quality 150 words in each the answers, then you can crack this mains. आपके 250 plus आ जाएंगे marks. If you put a relevant diagrams and map and flow chart along with your text and descriptions. Map flow chart का बहुत crucial role है, diagrams का crucial role है. तो यहाँ से फर्स्ट और फिफ्थ और एक सेक्शन ए से कंपलसरी, एक सेक्शन बी से कंपलसरी क्वेश्चन है. यहाँ पर भी सभी में 3 पार्ट हैं, ठीक है ना, ए बी सी. सो व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू बेसिकली राइट. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे. उसके अलावा सेक्शन ए से एक और क्वेश्चन तुम्हें पिक करना होगा. सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई एक क्वेश्चन एटलीस्ट पिक करना होगा. मान लो तुमने सेकंड पिक किया, उसमें भी 3 है, ए बी सी. सो 5 + 5 + 3. फिर उसके बाद सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में से तुमने फिफ्थ के अलावा 6th नंबर क्वेश्चन पिक किया. 6, 7, 8 3 क्वेश्चन होंगे यहाँ. 6th में फिर ए बी सी होगा, यानी 3 क्वेश्चंस. तो 5 + 5 + 3 + 3, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 16. और आपने कितने क्वेश्चन लिख लिए? 1 और 5th कंपलसरी वाले लिख लिए तुमने, और एक यहाँ से 2 नंबर पिक किया, एक 6. तो टोटल तुमने 4 क्वेश्चन लिख लिए. एक और लिखना है. टोटल 5 क्वेश्चंस एड्रेस करने होते हैं. एक क्वेश्चंस अब आप 3, 4 में से कोई एक पिक कर लो, या 7, 8 में से कोई एक पिक कर लो. यानी किसी भी यूनिट से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो. उसमें भी ए बी सी होगा, यानी 3 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन. हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट इन 3 hours? ऑलमोस्ट 4500 वर्ड्स. अगर यहाँ वर्ड लिमिट 15 वाले को और 20 वाले को 300 वर्ड, 350 वर्ड में लिखने हैं, 15 वाले को 250 वर्ड में लिखना है, और 150 वर्ड में 1 और 5th को लिखना है. आपके लिए चैलेंज ये नहीं है सिलेबस को कवर करना. किसी स्टूडेंट के लिए ये चैलेंज नहीं होता, बिकॉज व्हाट आई हैव सेड, देयर इज नो डेarth ऑफ मटेरियल. मटेरियल इज अवेलेबल, गाइड इज अवेलेबल, मेंटर इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट. प्रैक्टिस रिक्वायर्ड. प्रैक्टिस जब मैं कहता हूं ना, तो मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मीन्स यू हैव टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर दैट यू आर राइटिंग एन एग्जाम. ये नहीं कि कॉफी मग लेके घर में बैठा, पिया, 2 लाइन लिखा. ये प्रैक्टिस नहीं है. आप घर से मुझे कुछ कॉपी पेस्ट करके लेके आए, नोट्स दिखाए, बोला सर ये मैंने नोट्स बनाया. दिस इज नॉट प्रैक्टिस. ये तो आपने 10 आइडियाज़ कहीं से पढ़ा, कलेक्ट करके एक जगह नोट कर लिया, मेरे सामने आके आपने दिखा दिया. उसी आइडियाज़ को कई बार पढ़ो और अपने लैंग्वेजेस में लिखो, उसी टाइम फ्रेम में 7 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट. वो क्लॉक लगाकर जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे हाथ से समय निकल रहा है. द टाइम इज रशिंग. एंड द कैंडिडेट दोज हु प्लान देयर स्टडी according to the time frames, they cracks this exam in 1 or 2 attempts. Try to understand. आप में और उनमें या किसी भी स्टूडेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. ऐसा नहीं है कि क्रैनियल कैपेसिटी आपकी भी इक्वल है उन्हीं की बराबर.
और मैंने कहा कि एकेडमिक एक्सेलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप टॉपर हैं, आप IITian हैं, आप IIMS के हैं, या आप नीट क्वालिफाई अच्छे मेडिकोज हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? कंसिस्टेंट होना। क्या ज़रूरत है? कंप्लीट कवरेज होना। क्योंकि मैंने दिखाया, अभी मैंने पेपर इसीलिए शो किया कि तुम कोई भी यूनिट छोड़कर जा रहे हो तो तुम रिस्क ले रहे हो। कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, मैं बताऊंगा वो भी रिस्क लेना, लेकिन इनिशियली मैं नहीं कहूँगा कि आप छोड़ दो। और मैं बहुत कंटिन्यूअस टेम्परामेंट के साथ पढ़ाता हूँ कंप्लीट सिलेबस। एक बार आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिस के समय मैं बता सकता हूँ आपको कि इस ईयर क्या रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि समहाउ आई कैन गेस द क्वेश्चन इवन विद इन द यूनिट। बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं लास्ट ईयर, इस ईयर नहीं आएंगी। देर इज़ अ वेरी लेस रिपीटेशन ऑफ चांसेस, ठीक है ना। इसमें अभी आप देखोगे तो से फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाऊं। देखो, स्मॉल नंबर ऑफ मेगा सिटीज आया क्वेश्चन, मैंने कहा स्मार्ट सिटीज, मेगा सिटीज कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं। बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट इन जियो पॉलिटिक्स। अब क्या है, बाउंड्री 2020 में भी आया था, 2021 में भी पूछ लिया। कई बार सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है, सिंपलर पार्ट है, लिख सकते हैं कभी भी। बाउंड्री एक बार पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं। 2020 में भी इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने। 21 में कई बच्चे छोड़ के गए होंगे, नहीं आएगा, बाउंड्री आ चुका, फिर उन्होंने पूछ दिया, सरप्राइजिंग एलिमेंट। एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देयर इज अ लेस रिपीटेशन बाय द UPSC, ऑफन दे वोंट रिपीट। उसी टॉपिक से फिर से क्वेश्चन बहुत कम बनाते हैं, बट उस यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक यूनिट के अंदर कई टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको फर्दर बता भी दूंगा जिस ईयर आप मेंस लिखोगे कि क्या टॉपिक कवर करके जाओ, और उसी एक्सपेक्टेड लाइन में क्वेश्चन आएंगे। यू कैन ईजिली राइट 19 क्वेश्चन, बट मैंने क्या कहा, एग्जाम में तुम लिखने बैठोगे 4500 वर्ड्स की स्पीड होनी चाहिए, आपकी राइटिंग लिजिबल होनी चाहिए, मैप भी बनाना है, डायग्राम्स भी डालने हैं, फ्लो चार्ट भी बनाने हैं आपको, क्योंकि आप टीचर को बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सको। आपके प्रेजेंटेशन आपके कॉम्पिटिटर से बेटर होंगे तो आपको मार्क्स बेटर मिलेगा, और उसके लिए तुम्हारा पार्ट है कि वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। सो बेसिकली the presentation having role, okay, presentation having role, you have to present your ideas through diagrams and flow charts. And in geography, when you are making diagrams and flow chart, you have to use the colored pen or pencils or sketches, which is allowed in UPSC, which is not allowed in certain state public service commission examinations, but UPSC allow करती है। तो आपको कलरफुल डायग्राम्स और फ्लो चार्ट बनाने हैं, उसकी भी प्रैक्टिस, दैट अगेन रिक्वायर्ड अ प्रैक्टिस। अगेन यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। अब बेसिकली द स्टूडेंट फ्रैटर्निटी आर लेजी, पेन उठा के अब कलर कौन बनाए, कलरफुल बनाओगे, और ये स्टार्ट से प्रैक्टिस। कई बार बच्चे एक ही कलर यूज, जरूरी है, कुछ भी जरूरी नहीं है, बट देखें तो हर कुछ जरूरी है, क्योंकि आपको अपने कॉम्पिटिटर से 1 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने हैं हर क्वेश्चंस में। देन यू क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 19 मार्क्स। अगर हर एक क्वेश्चन में एक एक मार्क्स का एडवांटेज है, ऑल टुगेदर क्यूमुलेटिव 19 मार्क्स एडवांटेज होगा आपको। 19 क्वेश्चन लिखना है, तो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक नहीं करना। पढ़ाई कर रहे हो तो हर एक डायमेंशंस पे स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग वर्क करो, ठीक है। डेफिनेटली यू गेट सिलेक्टेड। सो प्रेजेंटेशन प्ले अ क्रूशियल रोल। नाउ फॉर एनी कैंडिडेट्स, एनी एस्पायरेंट, those who go for geography or any other optional subject in their preparation, what is the important part? Especially in geography, to build the basics, NCERT reading is important. Apart from NCERT, I suggested the candidate that go through GC Leong also, to build your basics.
उससे आपका फाउंडेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा. देन वी विल प्रोवाइड द क्लास नोट्स एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब थोड़ा बिलीव करके क्लास नोट्स ज़रूर पढ़ लो. अब क्लास नोट्स कई बार खो जाते हैं बच्चों के, बोला सर भूल गया, मिसप्लेस, डिसप्लेस, ओके. एंड देन आई विल सजेस्ट फॉर द स्पेसिफिक यूनिट, आई विल सजेस्ट सम रेफरेंस बुक्स, नॉट फॉर ऑल द टॉपिक्स. बेसिकली मैं बच्चों को सबसे कम बुक्स सजेस्ट करता हूँ, ना के बराबर ज्योग्राफी में, बिकॉज मैं आपको अपडेटेड मटेरियल देता हूँ और कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा मैगजीन्स. सेकेंड मैंने क्या कहा, मैप वर्क आपको करना है एक्सटेंसिवली. क्लास के साथ प्रैक्टिस करोगे या घर पर भी साथ में प्रैक्टिस करोगे. आई विल गिव यू द आइडिया हाउ. व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी और एनी बुक्स, जस्ट आदत बनाइए एटलस लेके चलने की. डिक्शनरी की हैबिट बचपन में सिखाई जाती थी, बड़े होने पे एटलस की हैबिट सिखाई जा रही है. वो आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए. लेके सो उठो, न्यूज़ देख रहे हो उसमें कोई प्लेस है, एक डायरी में हेड्स बना लो, एक A4 साइज पेपर स्लिट ले लो, उस पर लिखो प्लेस ऑफ द वीक्स, प्लेस ऑफ द मंथ्स. विंबलडन हो रहा है, कहाँ हो रहा है पता ही नहीं है. उसमें सेंटर कोर्ट क्या है, विंबलडन में बहुत सारे कोर्ट हैं, उसमें से एक कोर्ट है सेंटर कोर्ट, जहाँ मैच होने वाले हैं, सेमीफाइनल, फाइनल. कौन कौन सी लोकेशन यूक्रेन की, कौन कौन से सिटीज़ यूक्रेन का ऑक्यूपाई कर लिया रशिया ने, प्लेसेस हैं वो, देखो तो एक बार एटलीस्ट. सिंजो अबे को गोली मार दी गई एंड ही डाइड. किस शहर में, जापान के. G7 की मीटिंग हुई जर्मनी में, किस शहर में हुई. अभी मैं पेपर दिखाता हूं इंडिया का. देखो, दिस इज द एंट्री. ये आया था 2021 में. जीरो वैली विच इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, खेचोपली लेक विच इज़ इन गैंगटोक सिक्किम, तोरणमल, इट इज़ अ रिसोर्ट एरिया इन महाराष्ट्र, अ ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन. सुवर्णरेखा रिवर इन झारखंड विच across the Ranchi and Jamshedpur industrial belt. Koderma as a place in Jharkhand, rich mica belt of the world. Sir Creek is a water body along the Gujarat and Pakistan borders. Periyar Wildlife Sanctuary in Kerala. Pechi Dam in Thrissur, Kerala. Digha Beach in West Bengal. गंगा सागर नाम सुना होगा, मकर संक्रांति मेला भी लगता है वहीं नियर बाई. सागर आइलैंड है वहीं पर. वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत बीच में से एक. पाम्बन आइलैंड, रामेश्वरम, जहाँ पर के रामा सेतुज है, आर्किपेलागो. अब ये 10 एंट्रीज आई और इस तरह से दिया रहेगा मैप. इसमें लोकेट करना है उन प्लेसेस को और उसके बारे में फीचर्स लिखने हैं. क्या फीचर्स है, व्हाट इज द फीचर, फिजिकल, कॉमर्शियल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, कल्चरल. सो वंस यू प्रैक्टिस द मैप यू कैन एश्योर योर 20 मार्क्स. और ये टाइम सेव करता है. 2 से 3 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट. इफ योर मैप वर्क इज गुड, इन 5 मिनट्स you can guaranteed, you can assure your 20 marks.
और इसमें मार्क्स कटेंगे भी नहीं। अगर आपने फीचर लिख दिया, जो कोई इकोनॉमिक फीचर लिख दो, कल्चरल फीचर, इकोलॉजिकल, इतना तो डिमेंशन दे रखा है, कुछ तो याद आएगा। बट इट डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। इफ यू वेट कि सर करा देंगे सब कुछ, मैं कराता हूँ एक्सटेंसिवली 20 days मैप क्लासेस फॉर द इंडिया एंड द वर्ल्ड, समटाइम्स मोर देन 20 days। बट फिर भी क्या है कि मैंने क्या कहा, व्हाट इज द लर्निंग प्रोसेस। when you are reading the newspaper, when you are reading the magazines, you just make few pages in your diaries or create A4 size pages, make a folder और वहाँ places of the week और months of the year लिख लो। जो मीटिंग्स हैं क्रूशियल, जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जो गेम हो रहे हैं, कोई वेन्यूज़ है, कहीं समिट हो रहे हैं इंटरनेशनल, कहीं नेशनल, वो वेन्यूज़ को लिखो, उसके बारे में ये फीचर्स लिखो, हेड्स दिमाग में रखो हमेशा कि फिजिकल फीचर, कॉमर्शियल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, ये हमें पता होने चाहिए। सो यू हैव टू डेवलप द एटीट्यूड, इसको कहते हैं एटीट्यूड डेवलप करना ऑफ एन एस्पायरेंट। अ राइट एटीट्यूड यू हैव टू डेवलप बेसिकली टू क्रैक दिस एग्जाम, नथिंग एल्स। मैंने कहा वो हैबिट डेवलप करना ही एक चैलेंजिंग टास्क है, प्लानिंग होती है बेसिकली। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शो यू, मैं यही दिखाना चाहता था। तो मैप वर्क, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स, दीज आर द राइटिंग स्किल डेवलपमेंट पार्ट। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। एक दिन में नहीं आएगा फ्लो चार्ट बनाना, एक दिन में नहीं आएगा डायग्राम्स बनाना, क्या लें, मैप वर्क एक दिन नहीं आता। इसके लिए आपको कुछ दिन, कुछ महीने प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली करने पड़ते हैं। यू हैव टू क्रिएट टाइम। बट वंस इफ यू क्रिएट इन योर अर्ली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन द टाइम्स फॉर दिस थिंग्स, देन यू बिकम द मास्टर। ओके, you can develop a good writing skill. Now the next part is the contemporary issue. How can you cover through newspaper, through magazine, or the reports published by the government, published by the international bodies like IPCC published the climate report, the vulnerability of the climate, intergovernmental planet or climate change, United Nations framework convention on climate change design किया। तो रिपोर्ट्स आती हैं उनकी, एनुअल रिपोर्ट्स। गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे लेकर आती है, एनुअल होता है वो, पूरे इकोनॉमी का डेटाज होता है, स्टेटस होता है। ज्योग्राफी में भी, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो सपोर्ट करता है। रिपोर्ट पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर में। जब भी रिपोर्ट्स आते हैं, अभी नेशनल हेल्थ फैमिली सर्विस के रिपोर्ट्स आए तो पेपर ने पूरा कवर किया हर एक डिमेंशन, लगातार कई वीक्स तक। यू मस्ट बी विजिलेंट, यू मस्ट बी टेक आउट द कटिंग्स ऑफ द पेपर और यू हैव टू जॉट डाउन फ्यू पॉइंट्स, व्हाट आर द आउटकम ऑफ द रिपोर्ट्स। पूरी एनालिसिस एक वीक तक आई पेपर में, आपने देखा ही नहीं। ठीक है, तो रिपोर्ट है मैगजीन्स। मैगजीन्स में एक करियर मैगजीन्स, खासकर ज्योग्राफी के लिए मैंने कहा योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन इज वेरी गुड। आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट तो कुरुक्षेत्र में इतना बेहतर देता है। वंस यू अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल पार्ट, देन करेंट पार्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा योजना और कुरुक्षेत्र में। 20 रुपीज़ मैगजीन है पर मंथ की, नॉट वेरी कॉस्टली, यू कैन अफोर्ड इट ईजली। नाउ द नेक्स्ट इज द, एज आई हैव सेड, क्लास वर्क में हैंड आउट देंगे, स्ट्रक्चर राइटिंग बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया, उसके ऊपर यूनिट वाइज टेस्ट भी होगा। मैं क्या करूँगा, क्लास में आपको एक दो आंसर राइटिंग दूंगा, एक दो होमवर्क करके, अब बच्चा खुद दिखाए तो ठीक है, नहीं दिखाए तो टीचर एक दो बार पूछेगा ना, किया नहीं किया। यू आर नॉट अ किड कि कहूँगा कंप्लेन कर दूंगा पेरेंट्स से, बाहर निकाल दूंगा। ऐसा करता है क्या? तो कम से कम प्रोएक्टिव नहीं हो तो एक्टिव होना है। आप खुद पहले से नहीं करके आए तो असाइंड वर्क तो करो। नेक्स्ट, द 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। मैंने कहा नोट्स दिया जाए, पहले पढ़ लो। एनसीईआरटी मैंने कहा पढ़ लो, डरो मत, नया सब्जेक्ट है। फिर कहता है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग,
जैसे जैसे क्लास कवर होता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर पढ़ो उसको जाकर। क्लास लेक्चर सुनने के बाद रिपीटेशन, उसको पढ़ो 2 बार 3 बार। डाउट होता है मुझसे पूछो। आई नेवर इरिटेट, मैं कभी इरिटेट नहीं होता बच्चे पूछते हैं तो। हाँ, कभी हो सकता है उसकी बताने की ज़रूरत बाद में है, एक कॉन्सेप्ट के बाद तो मैं बता देता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसके बाद कई बार आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी है तो आइए पूछिए, बिकॉज लिंकेजेस होते हैं सब्जेक्ट्स में। एंड देन फाइनली राइटिंग, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू स्कोर मोर देन 250 मार्क्स। सो अल्टीमेटली यू हैव टू यूज एंड अप्लाई योर नॉलेज थ्रू राइटिंग्स। एंड देन what not to do is also important, वो भी सजेस्ट करना, डिले टाइमिंग का। what not to do, overburden of material। आपके दोस्त कई मटेरियल सजेस्ट करेंगे, कई बुक्स, तो फेथ तो रखो, कम से कम गाइड बता रहा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है तो कुछ अच्छा ही सजेस्ट कर रहा होगा, फिर भी आप सुनेंगे नहीं। और मल्टीपल गाइडेंस, जैसे मुझसे सुना फिर किसी और से यही बात पूछोगे कैसे पढ़ना है, फिर तीसरे को पकड़ के फिर वही पूछोगे आपने क्या किया था, उसके बाद भी मन नहीं मानेगा तो सोशल मीडिया पे देखोगे बच्चे टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी थी, एंड यू क्रिएट chaos इन योर लाइफ, अल्टीमेट chaos, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैविंग देयर ओन स्ट्रैटेजी, देयर ओन स्फेयर ऑफ वर्क, देयर ओन इन्वायरमेंट। शो ये नॉट टू डू में है, सोशल मीडिया पे टाइम मत गवाइए, एटलीस्ट एज अ बिगनर जब हो। फिर उसको मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, ग्रुप वर्क्स, यू मस्ट क्रिएट अ स्मॉल ग्रुप, अ ग्रुप विल मोटिवेट यू। कभी स्लो पढ़ोगे तो वो तुम्हें बूस्ट करेगा। आई ऑलवेज एम्फेसाइज, मैं हमेशा कहता हूँ ग्रुप में काम करने वाले लड़के के सक्सेस रेट हमेशा ज़्यादा है इसमें, क्योंकि द सब्जेक्ट इज़ वेरी वास्ट, देयर आर मल्टी डिसिप्लिनरी इन अप्रोच दिस एग्जाम इज, इट इज़ नॉट अ नीट पेपर, नॉट IIT's एग्जाम। 3 पेपर पढ़ा, पढ़ लिया, प्रैक्टिस की, चले गए। यहाँ कई विषय पढ़ने हैं, ग्रुप वर्क करोगे तो ईजी होगा, जल्दी सिलेक्ट होगे। शेयरिंग थॉट्स विथ द मेंटर्स, किसी को भी, बड़ा भाई हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, मैं हूँ, किसी को भी मेंटर्स मानो, तो फिर उसमें बिलीव करो, उसकी बात और आइडियाज सुनो, उसको कोशिश करो इम्प्लीमेंट करने की, अदरवाइज पूछो ही मत। फिर मैंने कहा था परस्यू योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, बिकॉज फॉर पर्सनैलिटीज इंटरव्यू में आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट पे क्वेश्चन होंगे, वो मेंस निकालने के बाद डेवलप नहीं होगा। बाद में आके मुझसे पूछोगे कि क्या मेरा इंटरेस्ट लिखूं, हॉबीज़ लिखूं, मैं क्या बताऊंगा कि क्या लिख दो। सो परशु, मैं कहता हूँ साथ साथ, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, थोड़ा खेलते रहो, थोड़ा देखते रहो, पढ़ते रहो, नॉवेल रीडिंग है, मूवीज़ वॉचिंग है, ठीक है, कुकिंग, फूड, कम्युनिकेशन विद द पीपल, कहीं घूमना फिरना है, जाओ, देखो, विजुअलाइज करो वहाँ के यूनिकनेस को। एंड व्हाट इज द की टू सक्सेस, व्हाट आई ऑब्जर्व बेसिकली, सेल्फ असेसमेंट। समटाइम्स द ओवर एंड अंडर कॉन्फिडेंस is the reason for failure of the candidate. So always assess yourself. वेट मत करो मैं बताऊंगा तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, आप खुद एसेस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द डिमांड। GS पेपर 1 ये सिलेबस कितना % प्रिपेयर हुआ, एसेस योर सेल्फ, ट्राई टू राइट द आंसर्स, फर्स्ट पिक द प्रीवियस ईयर आंसर्स, मेक द स्ट्रक्चर विद इन द टाइम लिमिट एंड एसेस योर सेल्फ ऑन द डेली बेसिस। एसेस योर सेल्फ आफ्टर 3 months ऑफ योर प्रिपरेशन, एसेस योर सेल्फ, 3 महीने में कितना कुछ क्यूमुलेटिव डेवलप किया आपने, क्या नई चीज़ें, क्या नए स्किल, क्या नई चीज़ें जो क्लोज टू इस एग्ज़ाम आपको पहुंचा रही है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है। एंड हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस, तो दिस एग्ज़ाम नीड परसिवरेंस, जूझना पड़ेगा। एंड the master stroke according to me is the discipline.
मैंने कहा कंसिस्टेंसी नहीं होने का एक कारण है आप डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। 2 बजे आना है तो 4 बजे आएंगे। सर पेट में दर्द था, दांत में दर्द था, तो आप बहाने बहुत बनाते हैं, डिसिप्लिन नहीं है। कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। मैंने कहा बहुत कॉमन चीज़ मैंने आपको आज सिखाई कि वीक में कितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। मैंने कहा शिंजो एबे असैसिनेटेड, दिस इज़ अ न्यूज़। मैं पूछ लूँगा असैसिनेट किसने किया, उसका भी नाम आया। वो एक्स मिलिट्री पर्सन है और हैंडमेड गन वो खुद बना लिया था। बहुत, अब देखो बहुत सारे फैक्टर हैं इस न्यूज़ में। जापान में स्ट्रिंजेंट गन पॉलिसी है, यूएस में लिबरल गन पॉलिसी है, इंडिया में स्ट्रिक्ट गन पॉलिसी है। वर्ड देखो, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट एंड देयर इज अ लाइट। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल लिखा है स्ट्रिंजेंट गन पॉलिसी, डिस्पाइट द स्ट्रिंजेंट गन पॉलिसी ही मैनेज्ड टू टेक द गन, एंटर इनटू द पब्लिक प्लेस एंड किल एंड असैसिनेट अ लीडर। सो आर्टिकल पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, लिखने का तरीका मिलता है। तो मैंने वही कहा यहाँ पर कि अपडेट रखो और पॉजिटिव थिंकिंग, डोंट बी निगेट। आपके आसपास ज़्यादातर फेलियर कैंडिडेट है, क्योंकि 5-6 लाख बच्चे देंगे प्री और 12,000 सेलेक्ट होंगे, मेजॉरिटी आर इन द फेलियर कैटेगरी, तो निगेटिव बातें करेंगे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। एक अटेम्प्ट नहीं, आपको यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दिया है एज अ जनरल कैंडिडेट, आपको 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए हैं ओबीसी में, एससी एसटीज में तो अटेम्प्ट बैरियर नहीं है, एज है एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन ये है कि बी पॉजिटिव, और दूसरे के बारे में भी निगेटिव ओपिनियन मत बनाओ। अपने बारे में भी पॉजिटिव रहो, दूसरे के बारे में भी पॉजिटिव रखो, क्योंकि जो निगेटिव इंसान है उसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं। वंस यू स्टार्टेड फाइंडिंग आउट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स इन योर सराउंडिंग, तुम्हारा देखना थॉट प्रोसेस अलाइंड हो जाएगा और आप अच्छी आंसर राइटिंग करेंगे। व्हेन यू एनालाइज द क्रिटिकल ओपिनियन, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्रिटिकल एनालिसिस आता है, देन योर एनालिसिस विल बी मच बेटर, because you are not only the negative person, you having the positive attitude also. Getting my point? तो पॉजिटिव थिंकिंग केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब किसी इंसान से, किसी जगह पर, किसी व्यक्ति से या किसी पॉलिसी कुछ को भी पढ़ो तो उसमें दोनों बातें देखो, निगेटिविटी क्या, पॉजिटिविटी। मीडिया जो है आज के टाइम में, न्यूज़पेपर, मीडिया, मैगजीन्स, अलग अलग ऑथर के द्वारा अलग अलग ओपिनियन लिखे जाते हैं, इसलिए एक से ज़्यादा ओपिनियन पढ़ते हैं, क्योंकि कोई उसको क्रिटिसाइज करेगा, निगेटिव ही दिखाएगा आपको, कोई पॉजिटिव डिमेंशन दिखाएगा। एज अ एस्पायरेंट आपको दोनों डिमेंशन देखने हैं और अपना एक अनबायस्ड ओपिनियन प्रोड्यूस करना एग्जाम में, नॉट द बायस्ड ओपिनियन, बियॉन्ड योर रिलीजन, बियॉन्ड योर कास्ट, बियॉन्ड योर रेस, बियॉन्ड योर रीजन। एंड वंस यू, अगर आपके पास ये चीजें होती हैं, डेफिनेटली that will support you to achieve your goal, and definitely you can achieve your goal. Okay, definitely. So this is the only mantras ये मैंने डिस्कस किया ज्योग्राफी। आगे I will tell you people the planning and schedules when I will launch the batch. And if you have a personal queries, then you may ask, you can give me a call. Okay, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं regarding optional, and you can think about. But practice is required and holistic coverage of the optional is required once. राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई इश्यूज आएगी, so further I will tell you the schedules of the classes and accordingly we will run. Okay. So enjoy, have a nice time, thank you very much. मिलते हैं फिर और बात कर लेना आप लोग, कुछ डाउट्स होंगे तो, ठीक है।